The fog was so thick that I could not see 10 meters ahead. Riding the highway was risky, but something kept pulling me off route. 24 kilometers off route. It was towards a temple on the bank of Ganga that I had never even heard of. The weather outside, Bapre, so foggy. Very risky to ride on a highway. Thank you. Bye bye. My target is to reach Chandrika Devi Temple Ghat. For that, I have to take a left turn after 8 kilometers of ride on the highway, and it will be a complete detour of 24 kilometers. But I think that I'm being pulled, or I'm being called by Mata herself. That is why I'm going there now. So I have turned towards Buxar. Buxar Ghat 5 kilometers. Okay. Seems 3 I have covered. There was a mother with a puppy. I fed them with the biscuit. It is such a nice feeling to see them eating. Soon I was crossing the bridge made over the Ganga. Chandrika Mata temple is after taking a left turn from here. There are lots of shops. लिखा है सिद्धि माँ चंद्रिका धाम। ऐसे घाट तक कैसे जा सकते हैं? घाट ही तो है भैया। हाँ, साइकिल लेके हमको घाट तक जाना है। ये जो है भैया स्कूटी जहाँ है खड़ी है। हाँ। घाट तक पहुँचो। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम। ये बनी बात। I made my bicycle stand with the support of that wooden bed. Ganga was in front of me. There were the boats waiting for the tourists. That is Chandrika Devi temple, which you see from here. I'm standing on the bank of Ganga at this moment. ऐसे ही रहो. Very good. I went to the ghat. I thought to do the Achman. This is something new which I have started. If you have seen my early videos, I could not dare to drink the Ganga Jal. But nowadays, I think I have started drinking it. Though it's a very little amount of water which I drink. But I am doing it. And I think this is a change which had happened in me. There was a family, they were there to take the bath in the Ganga. In this chilly morning, it is always very difficult to take a dip. लगाओ तब ठंडी दूध। क्या बोला आपने? क्या है, डुब्बी लगाओ तब ठंडी दूध। हाँ, वो तो है ही है। There were two women. They were selling the lamps which are being used for worshipping the Ganga. These days, I feel so much of peace inside me whenever I go and sit or stand at the bank of Ganga and see the various kind of activities happening around me. I think I can keep doing it for hours. This is when I saw the second pair of a mother and a puppy. They were also very hungry. I fed them with a packet of biscuit. After eating the biscuits, they left from there and I kept looking at them when they were going. So till the time I am here, let me share the story of Chandrika Mata and this place. It's been a long time. I'm sitting here and having a view of Ma Ganga, or also known as Gomati River in this area. This river is passing through the Lucknow also. So I have never heard about Chandrika Mata before. But when I came here and I was talking, I find out that she has a relation with Treta Yuga, Dwapar Yuga. She was here at the time of Ramayana. She was here at the time of Mahabharata. All the time, Chandrika Mata has been very well known deity in our Hindu religion. It is being said that the son of Ghatotkacha, known as Barbik, the Lord Krishna instructed him to come to this place and worship to Chandrika Mata so that he can gain all these powers which he used further there in the Kurukshetra Mahabharat ki ladai. I also came to know that Lucknow
This was established by the son of Lakshmana, which I never knew. At the time of that Ashwamedh Yagya, that horse, it was passing through this area, when suddenly the weather became very bad and lots of clouds were there. It was raining. The son of Lakshmana, he worshipped to goddess Chandrika, and she appeared herself, and the weather got cleared immediately. And this is how they could continue their yatra or Ashwamedh yatra at that time. There are many legends, and it happens there are different stories from different yugas, because when you have such a rich culture, rich history, so these are kind of stories are very common, and there are different versions of it. But it is being said that this temple is 1,300 years old. There is a local man from this village known as Katwara village where this temple is situated. So one night he got a dream. Goddess came and asked him to make a temple for herself. Though he could only make the temple, there was no statue, there was no murti inside that. Later on, that statue was found in some other village, and this is a stone made statue of goddess which has 3 heads. That is something very unique about this place. But there are lots of stories throughout the Ganga, and if you have seen the previous episodes of Listening to Ganga series, you must be aware of them. The only irony that I cannot share each and everything because of having the limitation of the time in the videos. But there are thousands of stories which I have came across, like the next one that is known as Om Ghat, and it has a relation with the Bhrigu Rishi, and there is a very interesting story about that. We will be sharing that story soon. This is the time to start the journey from here, and I am sure you will be liking and enjoying listening to Ganga series and learning lots of things as I am doing it. Though I don't consider myself religious still, but deep rooted somewhere, something is changing in me, and I'm liking this place, Ma Ganga, a lot. I will sit here some more time, and then we will start our journey to Om Ghat from here, but not now, after some time. After having that cup of tea, I thought to start the ride formally. So welcome once again to another episode of Listening to Ganga series. And as you know, this is a series where we are putting our efforts to cover and see the Ganga in between of big name and big places like Haridwar and Rishikesh to Prayagraj to Varanasi. So today we are standing here at this ghat which is known as Chandrika Devi Temple Ghat, and Ganga is flowing on my back. The journey we can sum up by saying these 3 words: 3 prayer, 1 long road, and we are on the way to Prayagraj, which is almost 150 kilometers from here. So let's start the journey. There's a truck coming behind me with a very loud 90s songs. Check it out. पता है कौन सा गाना था? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, तुमको ही मांगा. Time is 12 o'clock. I'm back on the highway where from I took a left turn. 24 kilometers I have covered since morning, and on the distance it is 8 kilometers. I was feeling hungry and I wanted to have something. So I went to a roadside dhaba. मेरे को लगा जैसे कोई रोटी बना रहा है. Let's check. खाने में है कुछ भाई? अच्छा, तो 1 प्लेट छोला समोसा कितने का पड़ेगा? 15. हाँ, दे दो फिर एक. चाय उसके बाद पी लूँगा. Hello. On the way, when I took a turn towards Brahma Ghat, I met with 2 couples. Both of them are YouTubers. I met some very nice people. हम लोग शायद घाट पे मिलेंगे एक बार फिर से. I'll let you know. Soon I was crossing Rishi Bhrigudwar.
महर्षि विवेक को धरती बिठौरा अपना अधिगम करता है। So these are the kind of villages or the locality which you cross while cycling here in Uttar Pradesh. Here most of the houses are made with the bricks and you will find cows and other animals tied up outside the house. Having a pond in the village is another common kind of a thing which you find here. This is when I was stopped by this group of locals. तुम लोग जा कर रहे थे तुम? कहाँ जा रहे थे तुम? अरे लोग तो आगे वाले गाँव तक जा रहे थे। ओम घाट कितना दूर है? अरे बस ये आगे बस वहीं जा रहे थे। बस मैं तो ओम घाट ही जा रहा हूँ। तो ओम घाट किस लिए मशहूर है? या मशहूर है भी या नहीं है? अरे मशहूर है, उसमें उत्तर वाहिनी है। ये उत्तर वाहिनी क्या होता है? जी उत्तर दिशा की तरफ बह रही है गंगा, बहती हूँ। बहुत कम बहती है इस जगह, इस साइड उत्तर की साइड। जो उल्टी गंगा यहाँ बहती है, हाँ। उल्टी गंगा बहती है यहाँ। वो मुहावरा है ना, उल्टी गंगा। तो तुम्हारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। बढ़िया लाइन है ना। ये वो जगह जहाँ गंगा उल्टी बहती है। फनी लग रहा है सुनने में। ओके, उड़ा उड़ा उड़ा। चलो चलो चलो, वेरी गुड। कितने उड़ गई पतंग। वेरी गुड। बचपन के दिन याद आ गए यार। वी यूज्ड टू बी किड एंड मेक द काइट्स फ्लाई लाइक दिस। ओह गॉड, इट्स फन टू वॉच देम। फिर नीचे टक्कर मार दी। तुम सारे पतंग उड़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो? कंचे खेल रहे थे। कौन जीत रहा है? बाजी लगाई है बाजी। तुम जीत रहे हो। कितने जीत लिए? एक ही जीता। अभी शुरू किया है क्या? अच्छा, बढ़िया लग रही है पतंग उड़ती हुई। कितने रुपए की है? 8 रुपए की पतंग आई है। It was fun to interact with these local kids. आजकल पतंग महंगी हो गई है नहीं? धागा कितने का लाए? 5 का धागा, 8 रुपए की पतंग, 13 रुपए। बहुत बढ़िया है। चल। ओके, सी यू। So Om Ghat 1, Bhitora is also one. You feel little different when you start approaching to Ganga Ji. And I'm not saying it for the sake of saying it. That is what which you will feel once you stay close to her, nearby in the area. After a ride of few more kilometers passing through the green fields, I went to Om Ghat. This is a wonderful road which is passing through the line of trees. Do you know the luckiest thing? I met with those local kids here also. हेलो भाई, नेट बोर्ड खोल के रास्ता बना दिया हमारे लिए। थैंक यू थैंक यू। They guided me to the ghat. ओ बाबा। We sat on the bank of Ganga and had a conversation about this place. कैसी जगह है? कुछ बताओ इसके बारे में। पौराणिक मान्यता ये है पुराने समय से हाँ। कि महर्षि भृगु की ये तपो स्थली है, इसलिए ये स्थान फेमस है। संस्कृत की पढ़ाई भी होती है, पूरा महाविद्यालय है। काफी हरियाली है हर तरफ। मेला लगता है यहाँ, सब जगह दुकानें होती हैं। यहाँ सब जगह दुकानें होती हैं, यहाँ सब भीड़ होती है, लोग गंगा स्नान करते हैं। हर अमावस्या लगता है, महीने में एक बार लगता है, भीड़ होती है। बचपन से गंगा जी को देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, है ना? हाँ, तो गंगा तब और गंगा आज कुछ फर्क दिखता है या ऐसे ही था हमेशा से? कई बहुत फर्क है। बहुत क्या फर्क है? फर्क ये है कि जल स्तर के हिसाब से बात करें तो जल स्तर भी काफी कम हो गया है पहले के हिसाब से। और दूसरी बात ये करें कि जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो भी पहले से अब बढ़ा हुआ है। हालांकि बहुत काम हो रहे हैं, सफाई स्तर पर बहुत सारी चीजें चल हो गई हैं, लेकिन अभी भी पहले की अपेक्षा भी गंदगी ज्यादा ही है। गुड यार, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देख रहा हूँ काफी चहल पहल है शांति के बावजूद भी। After having a conversation with these kids, I went to have another conversation with the local YouTuber group with whom I met on my way. तो आप लोग लोकल हैं सब? बिल्कुल लोकल हम और लोग यहाँ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। आज इनके ऑफिस की छुट्टी थी। आज हमारा ऑफिस फ्री टाइम पे एंजॉय हम लोग करने आ के आज चलो
यहाँ के अच्छा लगता है गंगा जी की वजह से या कुछ वैसा माहौल ऐसा है? माहौल ऐसा है, गंगा जी भी हैं और पॉजिटिव है और शाम गंगा को नदी गंगा के आरती पास होती है ना, बैठकर बहुत ज्यादा वो अच्छा अलग ही वाइब आपको देगी। यहाँ पर बताते हैं कि बहुत प्राचीन समय से ओम नाम का जाप बंद ही नहीं हुआ। कभी नहीं बंद होता। तो इसलिए इसका नाम ओम घाट है। हाँ, डे नाइट कभी नहीं। हाँ, शिवलिंग देखेंगे ना आप, हमारे इतना है कब तक। अच्छा। ओम घाट क्या है कि हम लोग के घर से काफी पास पड़ता है। तो जब वो दिल थोड़ा सा- करता है तब आ जाते हैं। Let me tell you what happened. After meeting all of them, when I started to return, I went to see the Shivlinga, which is considered to be very big. And I also saw that place where the Om chanting keeps happening day and night, 24/7. Met with the local Guruji and I thought if I can get a chance to stay here at Om Ghat in this ashram would be great. वाह, ये अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। इससे बड़ा आश्रम है ये नहीं। हाँ 6 बजे से ड्यूटी है हाँ ओम बोलने का। हाँ। मैं पहले रही 10 से 12, अच्छा खाना वाना खा के निकल गए घूमने। कोई आया तो थोड़ा बहुत मिल गया दक्षिणा दक्षिणा। हाँ अच्छा, नहीं तो नहीं फिर। कौन वेतन नहीं है, हाँ यह है कि अपना खाना कपड़ा हाँ जो मिलता है हाँ वही आप लोग जो खुशी से दे दिए वही। जरूर। मैं भी देखता हूँ क्या है मेरे पास। आप ये रखिए। कल्याण हो आपका भोलेनाथ। अच्छा धन्यवाद। So it's already sunset happened and I have left from the Om Ghat. 12 kilometer is my next destination. I don't know why I'm going there and why did not I ask for the stay at this place. I'm very surprised on me. I could have asked. I was passing through the road into the fields. The sun already had set. Soon it will be dark. Banana plantation here in this area. So next target is Asni Ghat or Asni Ghat. There is an ashram, Pashuram ashram. Let's see if I can go and stay there tonight with them. It's getting dark very quickly. So it's a closed bridge on Google Maps. The cycles and the motorcycles, they can go and come. So after having the darshanas of Ganga Maiya, we'll go to Pashuram ashram for the stay. It was getting dark when I arrived to this place to do the formal closing of my today's video. I have reached that rule which I have made that every day in the morning, start of the video, end of the video, I'll come to the Ganga. And I'm very happy that I'm here. It's a different feeling altogether. I'm liking it. I'm feeling so much peace right now. When I was standing there and recording the video, a group of locals they came and we started talking about this place and the place where I could go and stay that night. आपने देखा सही। तुम्हें कहा था हमने देखा आप अच्छा किया इसी अपने बहाने बाइक हमने भैया से कहा हमने बाइक रोको जरा भैया से मिला जाए। इसी बहाने गाइडेंस भी मिल गया ना, वरना मैं ढूंढ रहा होता। दिक्कत नहीं भैया, आप वहाँ चले जाइए। हाँ यहीं के हैं, मतलब प्रॉपर यहीं रहते हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी हैं। हाँ स्वामी जी यहीं पे रहते हैं, अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप लोग यहाँ के लोकल लोग हैं? हाँ लोकल है 3-4 किलोमीटर। हाँ ठीक है। असली घाट के बारे में कुछ बताइए ना, क्या है कैसे? नहीं ये देखो, ये सामने जो मंदिर दिख रहा है जी ये संगठा माता मंदिर है। हाँ बहुत पावन मंदिर है। अच्छा, कहानी कोई सुनाइए, इसके पीछे क्या है? बुरी शक्तियाँ प्रहार की थी, स्वयं यहाँ रक्षा करने आई थी। अभी यही रात में रुकोगे तो कल देखना कि वहाँ भी इनके जरा सा मतलब फटा हुआ है। अच्छा तो घी के मतलब फीहे भरे जाते थे। After that conversation with them, I was very confident that I will find a place to stay there at Parshuram Ashram. परशुराम आश्रम का रास्ता कौन सा है? यही वाला है। After asking from the local, I could manage to reach yourself. When I arrived to the ashram location, this local boy he asked what I want. आप भैया प्रणाम। कहाँ? मैं साइकिल यात्रा पे हूँ, चंडीगढ़ से आया, बनारस तक गंगा जी के घाट घाट जा रहा हूँ किनारे किनारे। तो मेरे पास वैसे तो सब सामान है, ओढ़ने का, सोने का, बस थोड़ा ये है ना कि लोग आसपास होंगे तो सुरक्षा रहेगी, इसलिए आपके इधर रात को रुकने के लिए आया था।
चंडीगढ़ से हो? मैं चंडीगढ़ से। यहाँ आप किसी को जान पहचान? मैं तो मुसाफिर हूँ, किसको जानूंगा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जो होते हैं ना, वो सब है। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वो सब है मेरे पास। वो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं पिछले 475 दिन से साइकिलिंग कर रहा हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। मेरी सारी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी। कभी नहीं। हाँ, पिछले से। He was not sure, so he made a call. भैया आ रहे हैं, भैया कागज वागज दिखा दो। यहाँ असल में आश्रम है ना। हाँ, कागज दिखा देंगे, वो हाँ, कोई दिखा नहीं है। That person came, they checked my documents, and then they permitted me to stay in that ashram that night. धन्यवाद जी। इधर चार्जिंग का हो जाएगा ना, यही लगा लेते हैं। हाँ, तखत इसमें पे लगा दीजिए तखत पे। हाँ, चार्जिंग का उधर से कर लेंगे, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। मोबाइल चार्ज इसका नहीं हो पाएगा, सारी बटन है। ऐसा कुछ है जहाँ से चार्जिंग हो जाए? हाँ, ये तो है इधर। अंदर से हो जाएगा। हाँ, तो एक काम करेंगे ना, हमारे पास तो एक्सटेंशन है, तार खींच लेंगे। हाँ, आपको भोजन अभी हम बताएंगे तो आप वहाँ चल के कर लीजिएगा। अच्छा, भोजन भी हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। I pitched my tent on a wooden bed, and later I went to have the dinner with them at the ashram location. So this is how the day came to an end. What a day it was. I started in thick fog on a dangerous highway, ended sleeping in an ashram with the people I had just met. In between, an ancient temple connected to Ramayana and Mahabharata, village kids, stray dogs, chai in a clay cup, and a long time just sitting by the Ganga. This river keep pulling me back, and I am not fighting it anymore. So see you in the next video. Till then, take lots of care of yourself. Keep smiling. Jai Ganga Maiya.